was confused. Go ahead. Yes. Okay, sir. The patient has a history of continuous psychiatric illness for past 2 years, which was precipitated by a police encounter of torture and physical violence towards the patient. For Mhm. past 2 years, he has been re-experiencing intrusive memories, flashbacks, and nightmares of the event. Avoidance of activities and people reminiscent of that situation, and persistent perceptions of heightened current threat are also reported. In addition, associated social withdrawal, depressive cognitions, problems in affect regulation, and difficulties in sustaining relationships are positive. Disturbed biological functions in form of disturbed sleep and decreased appetite leading to weight loss are present. 2 to 3 episodes of deliberate self harm as well as suicidal ideation were also reported in the past. However, no homicidal ideation was present. All of this has caused significant socio-occupational decline. Collateral information revealed self neglect at some occasions reportedly. Mhm. There is no history of mood elation, any psychotic features, obsessions, compulsions, and phobias. No history of fever, fits, head trauma, urinary or fecal incontinence, heat or cold intolerance, or any other systemic complaint was positive. There was no positive history of substance use. Regarding treatment history, patient was given a trial of risperidone in the past that was given up to 4 mg, but poor compliance and no response was reported by the wife. There is no positive family psychiatric history. The patient has ongoing conflicts with his wife because of unemployment and his current illness. Premorbidly, wife reports patient to be an introvert, a person having a predominantly cheerful mood, and he was highly dependent on his wife and and had a very close circle of friends. Okay. No significant findings in personal history or developmental history or past medical or surgical history were positive. On mental state examination, there was a 40 years old man with poor hygiene, dressed in shalwar kameez, comfortably seated in the chair. Eye contact was established, rapport was built and maintained throughout the interview. Mhm. Rate, tone, volume, and amount of the speech were unremarkable. Mood was objectively and subjectively low. Form of thought was linear and goal directed. Content of thought revealed depressive cognitions. However, no active suicidal or homicidal ideations were reported. There were no other significant findings on thought content. There were no perceptual disturbances. Orientation of the patient, attention and concentration, registration and recall, judgment, and abstract thinking were intact. Insight about the illness was present. Mr. Saif was vitally stable at the time of physical examination. General physical examination and the systemic examinations were unremarkable. I was not able to perform fundoscopy of the patient, unfortunately, because of unavailability of fundoscope at that time, which is a shortcoming, and I like to perform it in the future if I get a chance. Mhm. On the available history, mental state examination, and physical examination, after ruling out any general medical condition and substance abuse, my provisional diagnosis is number one, complex post traumatic stress disorder. The points in the favor of this diagnosis are re experiencing of the event, avoidance of the activities related with the event, perceptions of heightened threat, associated disturbances in affect regulation, and difficulties in sustaining relationships. My second differential diagnosis is that of major depressive disorder. The points in the favor are low mood, anhedonia, depressive cognitions, and history of suicidal ideations, as well as disturbed biological functions. However, the points against the diagnosis are the re experiencing of the certain traumatic events and the thoughts revolving around that event that have been mentioned above. My third differential diagnosis in this case is that of schizophrenia. The points in the favor of schizophrenia are
uh, the social withdrawal, negative symptoms of schizophrenia, and poor self care as reported by the wife. However, points against are the absence of any positive symptoms, any speech disturbances, or any thought disturbances. The etiology in this case uh, uh, the etiology in this case will be as follows. The predisposing factors are the cluster C personality traits that were elicited in the patient on collateral information. The precipitating factor was the police encounter. The perpetuating factors are the financial restraints and the ongoing psychosocial stressors. Mhm. With this provisional diagnosis, I will like to admit the patient and bring him under close supervision and carry out detailed psychiatric evaluation. I'll give appropriate nursing instructions, which consist of a safety check, keeping medication and harmful objects away from the patient, and ensuring availability of an attendant 24 by 7 with the patient. Detailed evaluation based on biopsychosocial model of management will consist of interviewing the patient, getting collateral information, and getting baseline investigation done before starting any medication. The investigations will include complete blood count, renal function tests, liver function tests, serum electrolytes, and an ECG examination. Then clinical findings will be substantiated by psychometric assessments, which in this case will be the PTSD symptom scale, Beck depression inventory, Beck anxiety inventory to check for any comorbidities, Minnesota multiphasic personality inventory to check for the personality of the patient, and projective personality testing if needed. I'll also like to obtain collateral information from friends and social circle of the patient, and I'll also involve the social officer and obtain and maintain a liaison with him. In regarding biological management of the patient, the management according to my current working diagnosis will be psychological majorly, but it will also be augmented by pharmacological interventions due to the comorbidity of depressive disorder in this case. uh, Regarding psychological management, I'll psychoeducate the patient and the family regarding the nature and course of the illness as well as the treatment. We'll proceed by doing a trauma focus CBT, EMDR, stress management of the patient, problem solving skills, and working on coping mechanisms of the patient. Regarding the pharmacological intervention, in this case, after discussing the side effects and after asking the patient's and family preference, I like to start the patient on an antidepressant, escitalopram. In this case, I'll start from a dose of 10 milligram and give it for an appropriate period of time and check the response and gradually increase the dose after seeing the response. um, Short-term prognosis in this case is good as the patient is admitted in a controlled environment. Compliance can be ensured, psychological interventions can be carried out, and the patient can be kept in check for any sort of suicidal ideation. Um, Long-term prognosis can be made better by ensuring compliance, regular follow ups, and maintaining good psychosocial support around the patient. So that's it. Good. So you have finished it in 10 minutes. Now, honestly speaking, well, this Yes, is a very good presentation, and I'm surprised because you have done everything. Well, there are some questions, of course, why you did, yes, why yes. you said that, but generally speaking, the presentation was absolutely fine. How much time Mhm. you took to complete this? To write the formulation or to take the history? First, the history, how much time? Sir, history or examination I did in exact 45 minutes. And उसमें what मेरी थोड़ी right? हाँ, I covered everything. फंडोस्कोपी रह गई थी. How much time
you took for writing a formulation? सर इसमें मैंने टाइमर लगाया था और मुझे इसमें 22 मिनट्स लगे हैं इतना नीट लिखने में क्योंकि आई वांटेड टू राइट डाउन एवरीथिंग. Okay, so you never missed anything and you wrote everything, and your primary diagnosis is PTSD. Now, which is good. I am, if you ask me, I am sitting in the examination situation. Before I proceed further, I will give you 8 out of 10. So there is no problem with that. Oh my god. And then Wow. I will try to definitely move forward with the questions. So the Yes, sir. first question I want to ask is that in the beginning you said that he was on risperidone 4 Yes, milligrams sir. per day Yes, sir. and no Yes, response sir. was reported. Yes, sir. How come a patient of 30 years of age who is an introvert was 40 years given old. risperidone and there was no improvement? So was the diagnosis at that time not established? Or if the diagnosis was established, do you think it has any role that he has insight and he is telling you everything at this point in time? Um, Sir, that medication was given around an year or half in a year, matlab 1.5 year back, and he took the medication for 2 to 3 weeks. And according to wife, that medicine showed no response. I might need more collateral information and history regarding the mental state of patient at that time, so I can answer your question with more confidence and more accurately. I don't know. If you perceive that the patient was given an antipsychotic, Yes, sir. current presentation typical of PTSD, but major depressive disorder is one of the, again, differential. Yes, sir. Would you like to consider a possibility of bipolar affective disorder as your differential? Yes, sir. It can be kept down the lane. But since during my assessment, I was unable to find history of any episode of mania or hypomania, so that's why I didn't keep it. However, I'll go back and assess the patient and take more collateral information and then confirm whether it is bipolar affective disorder or not. If we consider, I'm hypothetically Yes, sir. speaking because I haven't seen the patient. If we Yes, sir. consider that the patient was, when he had a police encounter, was Yes, sir. in a hypomanic state and he had Yes, sir. some controversy, have you tried to explore the reasons why he had a police encounter? Sir, I tried to explore the reasons, but the patient was not very open about those reasons, and he didn't give me clear answers. So I just couldn't explore in very much detail at that time, because I thought that there are other areas that I have to cover first. So I like to look into this exploration in future if I get time. So, do you think that this is important that a patient had an encounter with the police and the details were not available? So, maybe he was having an hypomanic or manic episode at that point in time and was Yes, sir. prescribed risperidone at that time. And now he's going into the depressive state. So, the diagnosis goes more in favor of bipolar. Yes, sir. Maybe. Okay. Appropriate answer would be because of the shortage of the time, I was not able to assess, although I tried to take up the information, but because of the limitations, I was not able to explore it further. But yes, I will keep the bipolar diagnosis as one of the differentials in my list. ओके सर वहां ठीक है. पे हीट नहीं होना. ओके सर ठीक है. ठीक है. जब ठीक है. एग्जामिनर ने आपको तीसरी दफा बोल दिया एक ही बात को, ठीक है. तो आप थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ कर लें. ओके सर ठीक है. मैं ये नहीं कह ठीक रहा है. कि आप गलत कह रही हैं या सही कह रही हैं, लेकिन जब जी जी एग्जामिनर सर. करता है ना किसी बात पे, ठीक जी है, चैलेंज करता है क्योंकि उसके पास एक रिटन हिस्ट्री मौजूद है, राइट? जी जी सर. जी आपने पेशेंट को पहली दफा देखा है. सो जब जी सर. एग्जामिनर आपको फर्स्ट टाइम उसने बाइपोलर की इंडिकेशन दी तो आपको उसी वक्त ये बात बोल देनी है
Okay, I was not able to get any information related to it, but yes, there is a possibility that he was having some psychotic episode due to which he had a police encounter, and there is a possibility that risperidone was given to treat that, and there is a possibility that there is a fluctuation of mood. Yes, then I will consider bipolar affective disorder as one of my differential and would जी सर. definitely go back to check it and review my diagnosis. ओके सर, ठीक है, नोटेड. आपने एग्जामिनर को सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं देना. जी सर. ठीक है, जब एक जी दफा सर. मैंने आपको इंडिकेशन दी है कि बाइपोलर को पूछोगे या नहीं पूछोगे, तो उधर आपने थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करके और जी सर. शुगर कोटेड अल्फाज में उनको कह देना है कि जी वैसे तो आप बकवास कर रहे हैं लेकिन चले मैं मान लेती हूँ. जी सर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर दूसरी दफा आपको इंसिस्ट ना करे. ओके सर. ओके. आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मोड में होना है, जी एक्सेप्टेंस सर. मोड में होना है. ठीक है, जी सर. तो जी. क्लूज को पिक करना है. ओके सर. शाबाश. अब अगला सवाल ये कि यू जी सेड सर. दैट यू वांट टू प्रिस्क्राइब escitalopram. यस सर. What is the evidence which two SSRIs are specifically prescribed for PTSD symptoms? More evidence related to PTSD symptoms. There are three, but you can name two. Which one? अच्छा. ओके. सर sertraline, And if I'm not wrong, yes, and paroxetine. okay. Sertraline, most evidence. Paroxetine, Yes sir. yes, evidence. And fluoxetine is the third possibility. The Yes sir. escitalopram. Then why, Dr. Saab, you mentioned about escitalopram when you knew it that the sertraline and the paroxetine are better tested in PTSD? Sir, honestly, that skipped my mind. Right. और यहाँ पे भी जवाब फिर इस तरह नहीं देना कि that skipped my जी mind. सर. ठीक है, जी यहाँ पे सर. आपने जवाब फिर इस तरह देना है कि yes, there are more evidence available. There is more evidence in favor जी. of sertraline and paroxetine. जी. But I somehow or the other had a feeling that he was probably taking escitalopram, so I thought that I will continue with it. ओके, ठीक है. या ठीक कोई है सर. इससे रिलेटेड बात करते हैं. ओके. आई फील बैड मैंने वो क्यों नहीं वाकई चूज की, मेरे जहन में नहीं आया. ठीक है. नहीं आया. ये ये इस किस्म की मिस्टेक्स हो जाती हैं. ठीक है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है. इस बात पे वो आपको फेल नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनके क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि सर्ट्रलिन और पेरोक्सिटीन का एविडेंस ज्यादा है. अब आपने अपने आप को कवर करना है कि आपसे गलती क्यों हो गई. तो उस गलती का आपको एक्सेप्टेंस जो है वो अगेन शुगर कोटेड पिल में देना है कि यस, अगेन I understand, sir. Yes, you are absolutely right. I don't know why I made this mistake, but I apologize for that. The more evidence is towards the sertraline and paroxetine. Third best drug is fluoxetine. Yes sir. There is as such no specific, again, study that I know that escitalopram can be given. However, I don't know, somehow or the other, when I was taking the history, I realized that probably he was taking escitalopram, so I continued with it. ओके सर. So ठीक है. अपने आप को थोड़ा सा कवर अप करके बचा लेना है, राइट? ओके सर. जैसे मैंने पहले कहा कि इस क्वेश्चन पे वो आपको फेल नहीं कर सकते अगर आपने एविडेंस बेस्ड एसएसआर के जवाब दे दिए हैं, तो वो जो आपकी मिस्टेक है वो कवर हो जाएगी. ओके सर. गॉट इट, गुड, ओके. और फिर आपने बात की इनकी साइकोलॉजिकल हेल्प की. जी. साइकोलॉजिकल हेल्प में आपने बहुत सारी साइकोथेरेपीज के बारे में बात की. यू हैव जी सर. मेंशन्ड 3 of them. कैन यू नेम देम? यस सर. यस सर. सर मैंने बात की ट्रॉमा बेस्ड ट्रॉमा फोकस सीबीटी की, ईएमडीआर की, और थेरेपी स्पेसिफिकली इन दो की थी. बाकी मैंने बिहेवियरल टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कोपिंग स्किल्स पे बात की थी. Okay. ये 5 बोले. Now, trauma focused CBT. जी.
What is the basic pathology in PTSD? Why it develops? सर इसमें मतलब आप मेरे से वो साइकोडायनामिक थ्योरी पूछ रहे हैं या न्यूरोबायोलॉजिकल पूछ रहे हैं? तो हम इससे जो आप मुनासिब समझती हैं इससे रिलेटेड है वो बता दें। अच्छा। अ, दोनों बता। सर सर इसमें वैसे तो मतलब जो आपके चाइल्डहुड स्ट्रेसर्स होते हैं, चाइल्डहुड अब्यूज, और उससे रिलेटेड होता है जब हम साइकोलॉजिकली बात करते हैं साइको डायनेमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो लो सेल्फ एस्टीम और जो ट्रस्ट इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्डहुड अब्यूज, उसकी वजह से ये होता है. When I was taking history from the patient, I specifically explored these areas, but वैसे they were not positive. तो इनकी बेस पे हम करते हैं इसकी जो थेरेपीज होती हैं. और जो न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हैं उसमें HPA एक्सेस की डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिसकी वजह से जो भी मुझे याद आ रहा है होता है PTSD. सो इसमें जब आप ट्रॉमा बेस्ड CBT की बात करते हैं, जी सो जी सर. बेसिकली उसमें ये होता ये है, जो थ्योरी है, इसमें जी थ्योरी जी सर. बात कर रहा हूँ, एक थ्योरी ये है कि जब ये इवेंट हो रहे होते हैं उसके जी बाद पेशेंट उस इवेंट को प्रोसेस नहीं कर पाता और बीच में उसकी मेमोरी में गैप्स रह जाते हैं उस इवेंट से रिलेटेड। ठीक है. ठीक है। सो जी सर. यहाँ से इंसिडेंट शुरू हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट खत्म हुआ, लेकिन इन हम्म बिटवीन क्या क्या हुआ, कैसे पुलिस आई, कैसे उसने पकड़ा, कैसे उसने मारा, कहाँ से घसीटा, कहाँ लेके हम्म. गया, वो जो इवेंट्स की डिटेल है वो बीच जी. में मेमोरी गैप्स आ जाते हैं। सो ओके. मेमोरी की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होती, जिसकी ओके. वजह से PTSD डेवलप हो जाता है। सो ओके. ट्रॉमा फोकस्ड CBT की जब हम बात करते हैं ओवरऑल, तो मेन ओके. टारगेट बिसाइड अदर थिंग्स ये होता है कि उसकी वो हम्म. रिकॉल है जी. ऑफ होल इवेंट, कि वो जो गैप्स हैं उनको जी. हम फिल अप कर दें और वो एक इवेंट पूरा उसको याद आ जाए, तो PTSD में ट्रीटमेंट में हेल्प आउट हो जाता है। जब आप उस प्रोसेस जी. स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, सारे जी इवेंट सर. स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, मेमोरी कंपोनेंट्स और गैप्स को कम खत्म कर देते हैं, तो पेशेंट हम्म. रिकवर कर जाता है। इससे रिलेटेड और भी थ्योरीज हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ देम, हम्म. दिस इज वन ऑफ देम, एंड ओके. इट हेल्प्स इन ऑब्वियसली reprocessing of the memory component of the traumatic event so that the हम्म. PTSD can be corrected, right? ओके. जी सर. इसलिए ट्रॉमा फोकस CBT पे एविडेंस बेस्ड स्टडीज भी रिलेटिवली ज्यादा हैं। अगला सवाल, एक सवाल और कहाँ लिखा था जी मैंने? जी जी सर. Okay. आपने बात की थी इनकी पर्सनालिटी की जी जी. और क्लस्टर C की ट्रेट्स की बात की थी, जी सर. लेकिन क्लस्टर C की ट्रेट्स आपने अपनी फॉर्मुलेशन में उसका जिक्र नहीं किया। कौन सी ट्रेट्स थी जो आपने एलिसिट की थी? सर उसमें जो सबसे मेन थी दैट वाज डिपेंडेंस एक्चुअली, तो मैं उसकी बात करना चाह रही थी. सो जो वाइफ पे डिपेंडेंसी है इनकी, जी उसकी बात करना चाह रही। जी जी जी. ये 30 साल के हैं, पर्सनालिटी डेवलप होती है 18 साल की उम्र में, जी शादी हुई 18 साल पहले, जी जी. इसका मतलब ये उस वक्त 22 साल के थे, तो पर्सनालिटी तो बन गई थी। जी पर्सनालिटी तो बन गई थी. तो फिर डिपेंडेंस वाइफ पे जो है वो पर्सनालिटी का हिस्सा है या सर्कमस्टेंशियल है? सर आई थिंक पर्सनालिटी का पार्ट है, क्योंकि उससे पहले ही वाज वेरी डिपेंडेंट ऑन हिज मदर एज वेल. हम्म, और व्हेन मदर पास्ड अवे, he was very sensitive to that event and it affected him a lot in the past as reported by the wife. तो मेन तो मुझे डिपेंडेंसी मिल रही थी, तो हम्म। आई डिडंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, तो मैंने क्लस्टर सी पर्सनालिटी ट्रेट यूज कर लिया. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। ओके सर. क्लस्टर के ट्रेड्स की जो एक चेन है ना, जी जी सर. ये चीजें, वो अगर जी आपको
आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि कट ऑफ वैल्यूज की क्या है, मेरा ख्याल है 3 है। अगर जी मिनिमम सर। ट्रेड्स 3 आपको मिले तो आप क्लस्टर सी पे बोलें, मेरा ख्याल है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ओके सर, आई अगर कंफर्म है। आपको ट्रेड एक ही एविडेंस इनडायरेक्ट मिल रही, फिर आपने इसको जी इस तरह सर। नहीं बोलना कि प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर सी ट्रेड्स, फिर आप बोलें कि ओके। देयर आर ट्रेड्स which हम्म। needs to be clarified हम्म। related to cluster C. So I will हम्म। consider cluster C personality traits, but ओके I सर। need more time to evaluate them. ओके सर, इसमें अगर आपके चलें आप पहले पूछ लें, फिर मेरा एक क्वेश्चन है, देन हाँ, आई लास्ट। पूछें पूछें आप क्वेश्चन। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब मैंने इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मैं बता रही थी, तो मेरे ज़हन में उस वक़्त कुछ और नहीं बन रहा था, तो उसमें मैंने ये बोल दिया था क्लस्टर सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो आप मुझे प्लीज़ ऐसे बता नहीं, सकते हैं मेरी हिस्ट्री के बेस पे कि मैं प्रीडिस्पोजिंग में क्या बोलूँ? आपने ऐसे नहीं बोलना। देखें, जी। आपकी प्रेजेंटेशन और बाकी सारी चीजें बड़ी स्मूथली चल रही थी, जी। लेकिन अब जो आपने बात की ना, उससे वो चीजें शेडो ओके। खराब हो रहा है। ठीक है सर। आपको वहां पे जब किसी चीज का टाइम नहीं मिल रहा, जी, जी, जी। आपने एग्जामिनर को ये कम्युनिकेट करना है कि आपको ओके। पता है कि पर्सनालिटी असेसमेंट और प्री हुँ। पर्सनालिटी असेसमेंट वाज वेरी वाइटल in this situation. जी सर। However, because of the shortage of the time, I was not able to reassess him completely. ओके सर। But ठीक I है। will go back if I will be able to and हुँ। definitely assess the cluster C personality traits, which are predominantly one of the precipitating factors in this situation. ओके सर, बिल्कुल So, ठीक है, थैंक यू। जो चीज नहीं की, क्योंकि एग्जामिनर आपके सर पे बैठे हुए हैं दोनों, जी सर। ठीक है, जी। वो दो आपके फरिश्तों के तरह आपके कंधों पे बैठे आपको देख रहे होंगे कि ये क्या कर रही है। जी सर। तो आपने जब 45 मिनट्स में उस क्वेश्चन को असेस किया और आपने पर्सनालिटी की ऐसी कोई बात नहीं पूछी, तो वो जी सर। फॉरन पूछा तो आपने है नहीं, तो आप यहाँ क्यों बोल रही हैं? तो आपने ये नहीं करना, आपने ठीक है बिल्कुल सर। ऑनेस्टली ये कहना है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, but हुँ। because of the shortage of the time, I was not able to assess. But in my perception, there are definitely personality traits which are suggestive of cluster C personality. I need more time and I need to revisit and assess it again. ओके सर, बिल्कुल ठीक है। So, वहां पे आपको एग्जामिनर को सिर्फ ये कम्युनिकेट करना है कि आपको पता है, आपको जी आता सर। है, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। 45 मिनट में नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आप 100% जेन्युइन चीजें तैयार करके ले आएंगे, जी सर। मुमकिन नहीं है, बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग, पहली चीज एग्जाम में जो वो देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आप कितने सेफ सकाइट्रिस्ट हैं, ओके सर। और सेफ्टी इस चीज पे डिपेंडेंट है कि ये सारे पैरामीटर्स आपको पता हैं और इनको कॉशियसली आपने रीअसेस करना है, रीविजिट करना है, अदरवाइज नहीं। ओके। ठीक है, जी, तो जी अपने सर। आप को सेव इस तरह नहीं करना कि बोल देना क्लस्टर सी, सेव इस ओके। तरह करना है, जुमला फिर वही जी। होगा कि because there are certain personality traits which appears to be very significant as one of the precipitating factors in this disorder, in this जी। case, I was not able to have sufficient time to assess those premorbid traits and personality clusters. So I will revisit and try to evaluate them, as I feel that there are definite personality C cluster traits that need जी। to be assessed again. जी सर, ठीक है So, सर। जहन में हो, एक्सप्रेस करें। जैसे ईस्टेलोग्राम के क्वेश्चन पे आपने दोनों जवाब दे दिए कि प्रोक्सिटीन जी और सर। सर्टलिन का एविडेंस ज्यादा है, जी। लेकिन क्या पहले ईस्टेलोग्राम बोल चुकी थी तो गलती थी। ये जी बात सर। भी याद रखिएगा कि एग्जामिनर को ये पता है कि आप अंडर प्रेशर चल रहे हैं, ठीक जी। है, लेकिन अगर आप मिस्टेक को करेक्ट कर लेंगे तो हुँ। चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एग्जामिनर ने आपको हिंट दी बाइपोलर की 1 दफा, जी। 2 दफा और 3 दफा, और आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, गड़बड़ हो जाएगी। सो जैसे ओके ही सर। आपको एग्जामिनर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन करे ना कि इस डायग्नोसिस हुँ। को एंटरटेन करेंगी, आप कहेंगे जी हुँ। आई विल ओके। डेफिनेटली डू दैट,
although I was not able to find sufficient evidence on the current against my assessment, but because of the shortage of time, I was not able to assess the whole of the parameters at that point in time. And of course, the patient and the wife was not able to give me the complete information. So I will definitely consider this as one of the differentials, and I missed that again, taking the details about related to it. Full stop. जी सर जी ठीक है अपने आप को आपने बचाना है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, कॉन्ट्राडिक्ट करना। जी सर ठीक है, अनलेस जी और अनटिल आप कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह शुरू कर दें कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन आपने ली है वो करेक्ट है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो क्योंकि एग्जामिनर आपके सर पे बैठा होता है और वो देख रहे हैं कि आप क्या असेस कर रहे हो क्या असेस नहीं कर रहे, तो वहां पे उनको चक्कर देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी। ओके ठीक है मोर सर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसके अपने आप को बचाएं, उनको चक्कर ना दें, छोड़ दें। ठीक है ठीक है, सो ठीक है इट सर वाज गुड प्रेजेंटेशन, इट वाज गुड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आप एक और केस करना चाहें या कल शॉर्ट केसेस करना चाहें तो कल हम 2-3 अगेन कर सकते हैं। आई हैव जी टाइम, सर कैन गिव यू टाइम। जी सर कल हम कर सकते हैं तो अगर आप फ्री हो तो मैं कल 8 PM पे रख लूँ क्लास। आप जल्दी रख लें, लेट रख लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी रखें मुझे ये बता दें कि आपने करना क्या क्या है, क्योंकि सर उसके आप तैयार होके वो चीजें लेकर आऊं ना आपको। सर आई रियली लाइक के मतलब जो मेरे साथ भी यहाँ हैं इनमें से जो जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो कुछ चाहें तो वो बता दें, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ। चलें, anybody wants to do anything specific related to the stations, OSCE stations, you can write on the chat box, I won't mind, or you can अस्सलाम वालेकुम सर। yes please। सर फोरेंसिक के स्टेशंस अगर हो जाएं तो अगर आप करवा दें प्लीज। चलो एक फोरेंसिक का स्टेशन करवा देते हैं, और सर और रिसर्च कर लेते हैं। रिसर्च कर लें, और कल हम एक 2 और करेंगे कि 3 करेंगे? 3 करेंगे क्योंकि दिन बड़े थोड़े हैं, फिर बाद में जी आपको सर मिलेगा। नहीं आई एग्री। और सर और कोई आप कोई आप रिसर्च कर लें, फोरेंसिक कर लें, और पॉसिबली इन्वेस्टिगेशंस कर लें। सर इन्वेस्टिगेशंस कौन सी? अब इन्वेस्टिगेशंस में सीटी, एमआरआई, ईईजी ओके और रेडियोलॉजी ठीक है, ठीक है ये सर ठीक 3 है। कर लें तो कि ताकि वो आपका थोड़ा सा एरिया वो कवर हो जाए। बाकी देखो जो चीजें हैं ना, इंफॉर्मेशनल केयर की, ब्रेकिंग बैड न्यूज की, ये सारी जी चीजें आप लोग माशाल्लाह 4th ईयर 4 साल आप लोगों ने साइकाइट्री में ट्रेनिंग की है, ये चीजें मुश्किल नहीं होंगी। अपनी नर्व्स को कायम रखना ओके सर और ओके रेलेवेंट गुफ्तगू पर से परहेज करना। आज जी योर सर प्रेजेंटेशन वाज एक्सीलेंट, so I have no problems, you prepared well, सिवाय एक जगह के जहां पर्सनालिटी पे थोड़ा नहीं किया और ओके बोल गए, उसके अलावा एवरीथिंग वाज ओके। ओके सर ठीक है, जी सर सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। श्योर। सर जैसे अगर हमें इटियोलॉजी में कोई हमें एक फैक्टर नहीं मिला, जैसे हम डिटेल में नहीं ले सके हिस्ट्री, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि आई कुड नॉट elicit any factor which seems to be precipitating or predisposing the individual to this illness, या हमें लाजमी कुछ ना कुछ लिखना है? ये नहीं बोल सकते आपके जी कोई फैक्टर नहीं है प्रेसिपिटेटिंग या प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ये हो नहीं सकता कि फैक्टर ना हो। हाँ, आपने नहीं असेस किया। सो अगर सपोजली बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है, जैसे म्यूट पेशेंट है, अब वो पेशेंट बोल ही नहीं रहा, आपका टाइम लगे जा रहा है और आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आप कोशिश कर रहे हैं लिख के, बोल के, इशारों से, एग्जामिनेशन में। सो ऐसे पेशेंट कभी कभी बदकिस्मती से, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जितना पेशेंट मुश्किल होता है उतना आपके पास होने के चांसेस आसान होते हैं, जितना पेशेंट आसान होता है उतने आपके पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक स्ट्रेट पेशेंट पड़ा हुआ है,
MDD का, कम्युनिकेटिव है, बातचीत कर रहा है, हर चीज बयान कर रहा है, काम आसान है, उस पर सवालात मुश्किल हो जाएंगे। एक पेशेंट है, डिसोसिएटिव है, म्यूट है, दौरे पड़ गए, नीचे गिर गई, उठाया, लिटाया, बिठाया, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, मुश्किल हैंडलिंग है, लेकिन पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज आप वो एग्जामिनर, मैंने बार बार एक बात कहता हूं, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एग्जामिनर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट संभाल कैसे रही। अगर आपने पेशेंट से बातचीत की है और सपोजिडली कि ये मिस कर दिया आपने, आप असेस नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला, भूल गए, या पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड था, तो आप आखिर में बोलें कि considering my current working diagnosis of dissociative disorder, the precipitating and predisposing factors needs to be assessed in detail. However, because of the shortage of the time and the patient was non-cooperative, I was not able to go up to that extent, but I definitely would like to assess the personality, the social issues, and other factors which may be contributing to this illness. हर चीज के बोलने का अंदाज बहुत मैटर करता है। मैंने जैसे शुरू में भी बात की, अभी भी बात कर रहा हूं, अपने आप को बचाने का तरीका आना चाहिए, और एग्जामिनर को ये कम्युनिकेट करना है कि जो मैं बता रही हूं या जो मैं नहीं कर सकी वो मुझे आता है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं बोल नहीं पाई। समझ आई बात की? जी आगे सर, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने जैसे बताया आपने कि अगर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ जाए बहुत ज़्यादा, जिसमें लूजनिंग है बहुत, जब म्यूट है, तो हम उसे एक तो उसके असेसमेंट को कैसे परस्यू करेंगे और फिर हम उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? आप उसी तरह परसू करेंगे जैसे करना चाहिए, कि आप उसके सामने बैठेंगे, उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। पेशेंट 5 7 10 मिनट गुजर गए, वो नहीं बोल रहा, फिर आप एग्जामिनर को कहेंगे कि जी मुझे कोलैटरल या मुझे कोई रिलेटिव या अटेंडेंट मिल जाए तो मुझे इजी हो जाएगी इंफॉर्मेशन लेने में। और एग्जामिनर को अगेन बात हुई है कि नजर आ रहा होता है कि ये नहीं बोल रहा, ये कॉपरेट नहीं कर रहा, इसको लूजनिंग बहुत है, टेंजेंशियलिटी है, सर्कमस्टेंशियलिटी है, बात ही कम्युनिकेट नहीं हो रही, तो वो आपको अटेंडेंट दे देंगे, और आप अटेंडेंट लेके उसको अगले 25 मिनट में उसकी हिस्ट्री जितनी भी बना सकते हैं बना लें, और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पेशेंट का जो भी पॉसिबल है वो कर लें। और जो एग्जामिनेशन करना सब कुछ है, लेकिन उसके टाइम का ख्याल रखें। पहले 4 से 5 मिनट पेशेंट से आपने बात करने की कोशिश की, अब आपको समझ आ गई कि पेशेंट नहीं बोलेगा, आपको ये भी समझ आ गई कि पेशेंट कोऑपरेट भी नहीं करेगा, सो उसको लटकाना नहीं है। एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करेंगे कि पेशेंट इज नॉन कम्युनिकेटिव, आई नीड सम कोलैटरल इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंट, वुड यू बी एबल टू प्रोवाइड मी सम रिलेटिव और somebody who is with him for a detailed assessment? वो आपको दे देंगे कोलैटरल। अगर वो कहे कि नहीं डॉक्टर साहब आप अटेंडेंट कोई नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने पेशेंट के पास वापस बैठना है और फिर उसकी असेसमेंट शुरू कर देनी है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी आपको मिल सकता है। और 45 मिनट के एंड में जब आपने फॉर्मुलेशन लिखनी है, तो आपने हर चीज के, पेशेंट नॉन कम्युनिकेटिव था, इंफॉर्मेशन आपको मिल नहीं रही थी, अकाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, करंट सिचुएशन में जो जो आपके पास है वो आपने असेस किया, एक वर्किंग डायग्नोसिस बनाया, फर्दर आपने डिटेल्स बयान की कि जी मुझे ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये रिसोर्सेस चाहिए, और बाकी सारी चीजें वही हैं कि आपने साइकोमेट्रिक स्केल्स कौन से लगाने हैं, दवाई कौन सी सिचुएशन में देनी है, प्रोग्नोसिस आपको क्या लग रहा है, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। सो किसी भी सिचुएशन में डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम पूरा करना है और एग्जामिनर को ये कम्युनिकेट करना है कि आपको पता है कि सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। यूर वेलकम। हाँ जी मानूर, ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू सो मच, यूर आपने वेलकम। अगर टाइम कोई निकाला। और बात पूछनी है तो पूछ लें, वरना फिर कल का लिंक, ये वाला लिंक आप यूज कर लें, बता दें, जी फिर सर, अल्लाह कल देख लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, और थैंक यू सो मच सर। केस
Sir, there is someone. I'm sorry. वेंसडे कर सकता हूँ एक, अगर कोई विलिंग हो तो वेंसडे को कर लेंगे लॉन्ग केस। सर लॉन्ग केस सर आई एम विलिंग, मैं तो करूंगी, अगर कोई और भी करना चाहे तो फिर और भी कोई कर ले। पूछ लें, देख लें और फिर उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लें एंड वील सेट, राइट? Yes sir, sure sir. There is someone who wants to ask a question. Dania Nasar. श्योर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर दानिया नसर बात कर रही हूँ, FCPS रेजिडेंट फ्रॉम निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। सर मेरा एक सवाल था कि जो पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन हुए हैं, जो रिसेंट ICD 11 का क्राइटेरिया है जो हमारे एग्जाम में भी होगा, उसमें उन्होंने टाइप A, B, C खत्म कर दिया है। बिल्कुल कर दिया। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को डाला है और साथ में डोमेन ट्रेट्स हैं उनके विद नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिटैचमेंट, डिसोशियलिटी, डिसइनहिबिशन, एनकेस्टिया। बिल्कुल। तो हमने इसी तरह से ही प्रोसीड करना है ना इन नेम्स के साथ जो इनके अंदर सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब एक बात याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICD 11 यस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जहां पे भी आपको आता है ICD 11 यूज कर सकते हैं, आप यूज करें। कुछ सिचुएशंस में जहां पे आपको ICD 11 की टर्मिनोलॉजीज फ्लुएंटली नहीं आती, तो फिर आप इस तरह की चीजें पर्सनालिटी क्लस्टर सी पर्सनालिटीज वगैरह बोल सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपको चैलेंज करे कि जी डॉक्टर साहब आप क्लस्टर सी की बात करिए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन ICD 11, फिर वहां पे आपको जवाब एग्जामिनर को देना पड़ेगा कि जी ये टर्मिनोलॉजीज ICD 11 के बेसिस पे हैं और मुझे ये चीजें असेस करनी। So it's a tricky situation currently because ICD 11 अभी इतना क्लिनिकल सेटिंग्स में कॉमनली नहीं इस्तेमाल हो रहा। बहुत सारे सेंटर्स में पढ़ा सब रहे हैं लेकिन फ्लुएंसी नहीं है ICD 11 की। सो उसमें एक थोड़ी मुश्किल है, दिक्कत है, और एग्जामिनर्स को भी ये पता होता है कि ये मुश्किल है, दिक्कत है। कुछ ना बोलने से बेहतर है कि आप क्लस्टर सी बोल दें, और अगर वो क्वेश्चन करें आपको तो फिर आप ICD 11 के इक्विवेलेंट जो भी चीजें हैं वो बयान कर दें। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं होता, निकल जाता है, जैसे मैंने नहीं पूछा ICD 11 का, आई मिस्ड इट, ठीक है, तो क्या आप बच गए, बस ठीक है। मकसद तो बचना और पास होना है ना। जी जी सर, बस ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत सी शुक्रिया। यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। Okay, thank you sir. ओके, अल्लाह हाफिज।